Hello everyone, good evening guys, and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself Juhi Sharma, and here we are with yet another current affairs session wherein we'll cover the current affairs from the 13th of October to the 15th of October. Right, I hope you all are doing absolutely fine. You all are there, right, for these current affairs. Now let me just tell you, if you're new over here, these current affairs are a part of a series which is known as Current Affairs SAMVAD. So on PRATHAM Test Prep, we do have this series known as Current Affairs SAMVAD, in which we cover the current affairs of the past 3 to 4 days. And in this Current Affairs SAMVAD series, we upload our episodes on every Monday and Friday. So every Monday and Friday at 8:30 p.m. we upload our current affairs episodes, Samvad episodes. And yes, without wasting too much of your time, let's just quickly see the first news of the day. But before that, if you're new onto the channel, hi, my name is Juhi. Take a moment, hit that like button on the video, subscribe to PRATHAM Test Prep's channel if you haven't done already, because trust me, we upload a lot of informative content specifically curated for undergraduate entrances, various courses for undergraduate entrances, like for various law courses, management courses, hotel management courses, psychology, CUET, and a lot of other things, right? So yes, make sure to subscribe to the channel, and let's quickly see the first news of the day. But before that, let us see what the quote for today is. The quote for today is, education is not only learning the facts, but it is actually training your mind to think in a much more better way. And this was a quote which was once said by Albert Einstein, the great scientist, right? Now let's quickly see the first news here. Now this particular news is from the category important days, right? And it is about International Day for Disaster Risk Reduction. Now International Day for Disaster Risk Reduction is observed every year on the 13th of October. 13th of October is a day for this. Now if you look at the day, it is about disaster risk reduction. That means to create awareness about the disasters, number one, to understand how disasters can affect the living beings, and thirdly, what can be the preventive measures if disaster happens, what can be the preventive measures that can be taken by the people. So this is a day which observes, or which actually revolves around all these things, to devote a raised awareness about disasters, their effect on living beings, and the preventive measures for the same. For the very first time, it was observed in the year 1989, and the observing body is United Nations General Assembly, UNGA, which is one of the principal organs of the UN. Where are the headquarters of UNGA? The headquarters of UNGA is in New York. Okay. The current head of UNGA is Dennis Francis. Dennis Francis is the current head of UNGA. Alright. Now for every important day, there is a theme attached to it, and for the year 2023, the theme is Fighting Inequalities for a Resilient Future. Fighting Inequalities for a Resilient Future is the theme for this particular Disaster Risk Reduction Day. And this basically finds the connection between the social disparities and the disasters that are happening. Alright, now moving on to the next important news, we have Global Hunger Index. Now this is one such news जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा questions comes in your entrance exam about the Global Hunger Index. Now if you are new onto this channel, you must not be aware that what we already teach you. So for every index that you study, there are few pointers that you should be aware of. First of all, that the index is released by which organization. You should be aware of that. कि index release कौन कर रहा है, right? Secondly, you should be aware of India's rank. That is another thing, that for every index you should know that what is India's rank. Third thing जो आपको पता होनी चाहिए is the top ranks. कि टॉप रैंक्स कौन से नेशन की है, किन कंट्रीज की टॉप रैंक है. थर्ड चीज आपको ये पता होनी चाहिए, राइट. एंड फोर्थली, इन स्पेसिफिक केसेस इफ यू कैन नो द बॉटम रैंक्स, अदरवाइज
knowing the above 2-3 things would suffice, right? टॉप रैंक्स आपने कर ली, इंडेक्स रिलीज कौन करता है आपने ये चीज कर लिया, राइट? इंडिया का रैंक क्या है आपने वो चीज कर लिया, टॉप रैंकिंग नेशंस या क्या है ये कर ली, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. सो दीज आर few of the pointers that you should be aware of whenever you are studying any index. I hope it is clear to everybody. Now when I look at the global hunger index, let's quickly see that this index is, first of all, what is India's rank in it, right? Let's quickly see India's rank. India is ranked at 111th out of 125 nations. 111 रैंक है इंडिया की 125 नेशन में, ठीक है? टॉप रैंकिंग कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जिसमें लेवल ऑफ हंगर बहुत कम है, राइट? जिसमें लोग भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, लेवल ऑफ हंगर कम है. तो टॉप रैंकिंग नेशंस वी हैव इज बेलारूस, we have Bosnia, we have Herzegovina, we have Chile, we have China. These are the top ranking countries. जहां पर आपका हंगर बहुत ज्यादा है ये है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, आपका यमन में, मेडागास्कर में. दीज आर द बॉटम रैंकिंग नेशंस. यहां पर इफ आई हैव टू टेल यू कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, राइट, उनकी रैंक कितनी है तो आपको ये पता होना चाहिए. इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान का रैंक इज 102, बांग्लादेश इज एट 81, नेपाल इज एट 69, श्रीलंका इज एट 60th पोजिशन. अगर आप ध्यान से देखो दिस पोजिशन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ द इंडिया रैंक, राइट? नाउ इफ यू हैव अ लुक एट इट, here in this particular case how global hunger index is calculated, that I'll show you in the next slide, but you have to make sure that population also plays a wide role in that, right? Now global hunger index, as I've told you, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स रिलीज कौन कर रहा है. So it is released by what? Concerned Wildlife and Wet Hunger High, right? It is released by them. एंड यहाँ पर इस इंडेक्स में आपको क्या दिखाते हैं, इसमें बेसिकली हंगर को ट्रैक करते हैं नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पर ऑन अ पर्टिकुलर, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज हंगर एंड हाउ हंगर इंडेक्स इज देयर, दे डू दैट, right? Now World Hunger Health is a private organization which is based in Germany. 1962 में आपका स्टैब्लिश हुआ था एंड यही ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आपका क्या करता है, रिलीज करता है. Now next slide पर you look at that how GHI is calculated. Okay. Now कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए that GHI जो है is a score based index, right? हर कंट्री को स्कोर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्मूला. ओके, एक फॉर्मूला है जो ऐसे क्यूरेट किया गया है कि मल्टी डायमेंशनल जो नेचर है हंगर का उसे कवर करे और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दे डू व्हाट, दे कैलकुलेट अ स्कोर. ओके, नाउ दिस GHI स्कोर, what you can look over here, ये GHI स्कोर जो है इट इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला. इस फॉर्मूला से कंबाइन होकर आपका हंगर इंडेक्स निकलता है एंड ये इज बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स, 4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है. द फर्स्ट वन इज अंडर नरिशमेंट, सेकेंड वन इज चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड वन इज चाइल्ड वेस्टिंग एंड फोर्थ वन इज चाइल्ड मर्टैलिटी. ओके, ये आपके 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर एक फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट करते हो और उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि कौन से कंट्री में कितना हंगर का इंडेक्स है. ऑलराइट, नाउ अंडर नरिशमेंट क्या है? अंडर नरिशमेंट इज वो पॉपुलेशन जिनका कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट, राइट? जो लोग प्रॉपरली जिनको फूड नहीं मिल रहा, प्रॉपरली उनको अपनी डेली कैलोरी इनटेक नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट अंडर नरिश्ड पीपल आर एंड दैट इज व्हाट अंडर नरिशमेंट इज. ओके, जिनका ये वो पॉपुलेशन है जिनका कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट. All right. Now the second parameter you have is child stunting. Okay. Child stunting क्या है? ये वो पोर्शन है, ये वो शेयर या वो परसेंटेज ऑफ बच्चों का है जो 5 साल से नीचे है. ओके, लेकिन उनके एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, राइट? सो दीज आर अंडर 5 year चिल्ड्रेन हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज. मतलब इट इज अ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड वेस्टिंग. चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? वो बच्चे जिनका हाइट के
बॉडी, उनका वेट बहुत कम है, मैल नरिश्ड है, अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन में आते हैं, राइट, वो आपका हो गया चाइल्ड वेस्टिंग। एंड द फोर्थ वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है कि बिल्कुल ही इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है, कंप्लीटली अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, राइट, और अपने 5th बर्थडे या फिर 5 साल के होने से पहले द पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन who die before their 5th birthday is what child mortality is. All right. Now क्या है, I'll repeat it again. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका जो स्कोर कैलकुलेट होता है वो 4 आपके पैरामीटर्स होते हैं, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला आपका है अंडर नरिशमेंट, सेकेंड इज चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड इज चाइल्ड वेस्टिंग एंड द फोर्थ वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। ऑलराइट, अंडर नरिशमेंट बहुत सिंपल, ये क्या कि जब आपका कैलोरीफिक वैल्यू आप उतनी नहीं ले रहे हो, आपका कैलोरी इनटेक उतना नहीं है जितना आपको रिक्वायर्ड है, आप सफिशिएंट नहीं ले रहे हो, दैट इज व्हाट अंडर नरिशमेंट इज। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, दीज आर दोज चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। सो बेसिकली आप ये देखो, यहाँ पे 5 साल से अंडर के बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है। अंडर द एज ऑफ 5 वो बच्चे जिनका हाइट कम रह गया है एज पर द एज, मतलब उनकी एज के हिसाब से वो उतना ग्रो नहीं कर पाए, दैट इज व्हाट चाइल्ड स्टंटिंग इज। The third one is child wasting, wherein the height of the child does not match their weight, right? कि आपका क्या है, 5 साल से कम का बच्चा है, बड़ा है, हाइट में वो थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ उसका वेट डेवलप नहीं हो रहा, अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटीज वो बच्चे जो अपने 5th बर्थडे यानी कि 5 साल के होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन सारे इंडिकेटर्स को लेकर आपका एक स्कोर बनता है, राइट, और उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपका GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट होता है ना। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, इंडिया का रैंक इज 111th, राइट, दिस इज व्हाट इंडियाज रैंक इज। Now moving on to the next news, we have about Saraswati Samman. Now Saraswati Samman is one of the most prestigious honor in the field of literature in India. India में अगर literary field में अगर एक one of the highest recognition अगर है, that is what Saraswati Samman is, right? Now we have 3 awards जो आपके one of the highest recognition in the field of literature. You have Jnanpith Award, right? You have Saraswati Samman and then you have Vyas Samman. So कौन से हैं? You have Jnanpith Award. I'll just write it for you over here. Jnanpith Award is one. Secondly you have is Saraswati Samman, जिसके बारे में न्यूज में है, right? Saraswati Samman. And the third one is Vyas Samman. These are 3 most prestigious honors which are given in the field of literature. सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात आपकी हो रही है किसकी? यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट सरस्वती सम्मान। और यूजुअली क्या होता है, ये अनाउंस 1 साल पहले हो जाता है, प्रेजेंट बाद में होता है। सो इस साल आपने अगर आप पिछले 1-2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपने शिव शंकरी का नाम सुना होगा पहले, तमिल राइटर हैं और अनाउंस किया था लास्ट ईयर कि उनको दिया जाएगा क्या, उनको दिया जाएगा सरस्वती सम्मान फॉर 2022 ईयर फॉर हर मेमोर फॉर अ बायोग्राफी विच इज नोन एज सूर्यवंशम। ओके, ये उनका मेमोर है अबाउट हर लिटरेरी जर्नी, अबाउट द सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट शी हैज सीन ओवर अ पीरियड ऑफ 7 decades, राइट? Now this award is given or presented by the KK Birla Foundation देती है, जिसमें एक आपका citation होता है, एक plaque होता है और 15 लाख का प्राइज अमाउंट होता है, राइट? हेलो बेटा, so this is the prize amount that they have, alright? Now ये जो आपका लिटरेरी अवार्ड है is given annually, साल में हर साल आपको दिया जाता है, इट इज एन एनुअल ऑनर। और इसमें आपके बेसिकली आपको पता है कि हमारी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस कितनी है, वी हैव टोटल 22 लैंग्वेजेस, राइट? लैंग्वेजेस के बारे में कौन से शेड्यूल में मेंशन है? शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? सो उन सारी 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है? गुजराती, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, दीज आर फ्यू ऑफ द 22 languages that you have. Now वो सारे literary work
जो इंडियन राइटर्स ने लिखे हैं ईदर ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस और पिछले 10 साल में लिखा हुआ है, उनको these are the people who are considered for this Saraswati Samman. As I've told you also, Saraswati Samman is the highest recognition in the field of Indian literature. 1991 में establish हुआ था. देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन देती है. इसके अलावा व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड are the other honors in the field of literature. All right. Now moving further, we have the next news. Michael Douglas conferred with the Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award. Now Hollywood actor है, producer है Michael Douglas और उनको felicitate किया गया for the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Right, 54th edition International Film Edition जो आपका इंडिया में हो रहा है in the Goa. वहाँ पर उनको ऑनर किया जाएगा. पहली बार अवॉर्डेड इन द ईयर 1999 और फर्स्ट विनर इसके रह चुके हैं बर्नार्डो बर्चलुकी. राइट नाउ ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय the Indian Union Minister, right? This information was given by the Indian Union Minister of Information and Broadcasting. We know that who is this? This is Mr. Anurag Thakur, right? उन्होंने ये announcement की थी on Twitter, right? Which is currently known as Site X. And ये film festival will be there from November 28 to 28. First time ये award कौन से year में दिया गया था? In the year 1999. This is the first time these awards have been given by International Film Festival of India, also known as IFFI. Thank you, Ashish Garg sir. Now moving further, we have Neeraj Chopra nominated for 2023 World Athlete of the Year. Now Neeraj Chopra, we all know, is associated with the sport javelin throw, right? So World Athletics, global governing body for athletics जो आपकी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? They have officially nominated Neeraj Chopra in the men's category, the Men's Athlete of the Year Award 2023. And after his remarkable achievements in its particular sport, and we know that he has clinched gold for the country in Olympics and in World Championships as well, right? So there were 11 nominees, and among those 11 nominees we have Neeraj Chopra also as one of the world champion, and he is one of the nominees for the world's best male athlete. Right now, the World Athletics is formerly known as the International Amateur Athletic Federation. So from 1912 to 2001 इसको International Amateur Athletic Federation बोलते थे, and 2001 से 2019 तक इसको International Association of Athletic Federations बोलते थे. Both of them actually means the same. Currently, since 2009, it is known as the World Athletics. Alright, the next news is about Forbes India Top 100 Richest List 2023, and in this we have the Chairman and Managing Director of Reliance Industries, Mr. Mukesh Ambani, at the top position. So Forbes हर साल ही अपनी लिस्ट निकालता है Top 100 Richest Indians, and इसमें आपका मुकेश अंबानी is at the top with net worth of $92 billion. Now last year, if you have noticed, मुकेश अंबानी ने for a brief moment of time अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी को गौतम अडानी ने उनको रिप्लेस कर दिया था for some time, but now गौतम अडानी has slipped on to the second position, and यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मुकेश अंबानी has achieved his position जो उनकी पहले थी वो उन्होंने वापस से ले ली है. थर्ड स्पॉट पे we have Mr. शिव नादर. On fourth spot, we have Savitri Jindal from the Jindal Group, and these are few of the top 100 richest billionaires according to Forbes. In this particular list, you can even see the list of all the, all the Indians, top 10. Let me just quickly take you, let me just quickly brief you about it. The first one is Mukesh Ambani, as we have already discussed. $92 billion. Company is Reliance Industries, and they have a diversified network of the countries, as in they are into a lot of other ventures as well. Second, we have Gautam Adani, right? Again, Adani Enterprises, again a diversified industry. Then we have Shiv Nadar of HCL,
right, which is completely technology based industry. Then we have from the OP Jindal group, we have Savitri Jindal, which are majorly into metals and minings. Next we have Radhakishan Damani from the Avenue Supermarts, fashion and retail. Next we have Cyrus Poonawala from the healthcare department. They were also responsible for making one of the vaccines for COVID, right, and the name of the company is the Serum Institute of India. Next is Hinduja family, Ashok Leyland company. It is again a diversified industry. Then we have Dilip Sanghvi from Sun Pharmaceutical Industries, again a healthcare brand. Then we have from the Aditya Birla group on number 9, Mr. Kumar Birla, again a diversified company. And on number 10 we have Shapurji Palonji group, which is again a diversified company. And the person who's on rank 10th is Shapur Mystery and family, right? So this is all about the top 100 richest list according to Forbes. And with this we have covered all the important news that had happened from the 15th to the from the 13th to the 15th of October. Thank you so much everybody for staying tuned. I shall be meeting super soon in the next video session that will be on Friday. Till then, take care, bye bye, stay safe, and yes, all the best.